as most of the students were feeling difficulty in going through the set test. So today I'm here with a new video. So from the starting to the end, we will go through all the questions, all the examples given in the well set book. Our first chapter is arithmetics. Okay. So in this arithmetics basically means the addition, multiplication, subtraction, or division of anything. It is a set of collections of things that have been grounded together in some ways. These things can be elements or member of a set. These are basically the we can say numbers, sets, or any members of any set which are added, divided, subtracted, or multiplied. So, for example, if A is a set of former president of United States, then John Adam is an element of set A. फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास एक पूरा सेट है उसके अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जो कि उस सेट का क्या है मेंबर द होल अरिथमेटिक बेस्ड ऑन सेट एंड मेंबर्स. If B is the set of vowels in English alphabet, then I is the member of B. एक B है पूरा vowels का set है उसके अंदर I है एक member है जो कि क्या है B का member है पूरे B set का member है. If C is the set of prime number, then 17 is the member of C. अगर C एक पूरा क्या है we can say set है prime number का, so in that the 17 जो number है वो क्या है member है set C का. So like this the symbol of it is an element. We erase this. Okay. So like this we have what? The symbol of I an element, for example member. So we can write C is equal to 17 is equal to C. The union of two sets X and Y is set consisting of all elements that are in X or in the Y both. अभी what is union? Union basically क्या होता है? Union is basically sum of all the sets. Now here they have given the two sets X and Y. So union is basically the all members present in X set and all members present in Y set is the union of both sets, all members present in set. Fine. So after that here we have intersect. Okay, here it is given the union must be written like this. For example, X is union of Y. The members of all the X set and the members of all the Y set will be added. Will together will form a union. Okay. After that here we have intersect of two sets X and Y is considering only the elements that are being both common. इसके अंदर बात की जाए तो हम ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि दोनों के अंदर क्या हो कॉमन हो. Okay, so for example, if we have this is the intersect A X is intersect of Y. In this, if X set is 1, 2, 3, 4, and intersect if Y set is given like this is the example. If Y set is given 1, 2, 3, so we have to find out the common, which is the element, which is the member, which is present in both the set. So here answer will be 1 and 2 because these both are 1, 2, and 3. Here the answer will be 1, 2, and 3 because these three are the members which are present in the both sets. So this is the intersect. Fine. Moving towards the like here you can see union and intersect is given. After that here example number 1 is given. If A is the solution set of x square minus 4 is equal to 0 and B is the solution set of x square minus 3x plus 2 is equal to 0, how many elements are in the union of two sets? अभी दोनों सेट के अंदर union कितना होगा? So we're gonna sum up this. Okay, so here I'm going to find out the union of this. First of all, let me write the set. A set is x square minus 4 and B set is given x square minus 3x plus 2. Okay, so now here they have asked to be find out the union. So A union B is equal to x square minus 4 union x square minus 3x plus 2. Okay, as I have written the union over here, so now I have to find out the answer. So that will be x square 1 minus 3x and plus minus 4 plus 2. This is the union of this one example. Okay, I hope this first one page is clear to you guys. Moving towards another page.
So here is page number 1 which is given. So in this we have the line bar. So most of people feel difficulty in making the line bar. So let me explain this line bar in very much detail. So here as I'm drawing the line bar, so just mention the zero in the mid. Mention the zero in the mid. And at the left side of zero you have to put the negative signs like 1, negative 2, negative 3, and on the right hand side of 0 you have to put positive 1, positive 2, positive 3, and so on. So this is basically the line bar, and mid between it will be like in the mid between of 0 and 1 it will be minus 1 upon 2. In the mid between 0 and 2 it will be minus 2 upon 1 upon 2, oh sorry, plus 1 upon 2. So this is how the line bar is basically formed. So here we have signed number. The number to the right side of the zero lined by the positive, as I showed you, the numbers which are on the right side of the zero will be positive numbers, and the numbers those are on the left side will be negative numbers. Negative numbers must be written in the sign of like minus 2, minus 1. Negative sign will be written like this. After that here it is given that, yeah, positive number can be written as, positive number will be written as plus 2, plus 1, plus 3, like this. So usually but usually writing without it, we can, all non zeros are known as signed number. जितने भी नॉन जीरो हैं, like only zero is the number, after that 2, 3, 4, minus 2, minus 3, these all are what, these all are the signed number. So here we have key fact number 1. Okay, let me explain you this key fact number 1. For any number a, exactly one of the following is true. किसी भी नंबर के लिए कोई एक तो ट्रू होगा, आइदर वो एक नंबर क्या हो, नेगेटिव हो, या तो वो नंबर ज़ीरो हो, या तो वो नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर इज नोटेड बाय ए बार. अभी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है नंबर की, दैट इज नोटेड बाय ए बार, is the distance between a and a naught to the number line. अभी ये a naught what is it? It is the basically the distance between 0 to positive or 0 to negative. This is basically the distance which is represented by a bar. Okay, since 3 is the 3 units at the right of the 0, so line will be minus 3 is 3. Unit to the left 0, both are the absolute value. So here you can see 3 is equal to 3 bar 3. So if I am going to take the negative, it will be also 3, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हम बार में लिखते हैं और वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, सो द आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. रिमेंबर दिस, कोई भी वैल्यू अगर हम बार के अंदर लिखते हैं और वो वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, सो आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. ओके, मूविंग टूवर्ड्स एग्जांपल नंबर 2. Yes. Example number 2. What is the value of bar bar 3 minus, okay, bar 3 bar minus 5 bar? We have to find out the value of this. So first of all, we have to merge this. Bar 3 minus 5 bar and bar. Then we have what? 3 minus plus, लेकिन sign will be minus, it will be 5. Okay, and the answer will be minus 2. When it comes from when the value is in the minus bar, so the answer will always be positive. So here our answer is 2. Okay, so now moving towards key fact number 2, in which they are saying if any number a and positive number b, कोई भी number a हो या positive number b हो, like it can be written as, like here the value is given a bar is equal to b, so this value can be written like a is equal to b, क्योंकि बार से निकल के आएगी is equal to b, और this value can be written as a is equal to minus b, क्योंकि ये बाहर से निकलेगी, so either it can be minus, ये minus हो सकती है. Okay, so these are some conditions in which the value can be written like this. Second is a is less than b, or it will be minus a less than minus b.
and third is a is greater than b, so it will be a greater than minus b or a is greater than b. So these are some conditions which are to be followed. Okay, and now moving towards third page, so let me share the screen. Okay, so here we have an example in which they are asking how many integers satisfy the inequality x bar is less than x, x bar is less than x. Okay, satisfy the inequality that is x bar x. So as you can see, we have what? First of all, we have given the value of pi. So pi is basically less than x less than pi. And we know that the value of pi is minus 3.14. So that will be less than x, and that will be less than minus 3.14. So the values which satisfy those must be in mid between minus 3 points. So those will be minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. So these are some values which satisfy this equation, because if the value will be greater than 3, so it will be greater than pi. So we have to find the value which must be less than pi. So as you can see, these are some values which are less than pi. So those are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So those are how much value? Those are 7 values. So our correct option will be C. Okay. After that, here we have arithmetic is basically concerned with addition, subtraction, multiplication and division. Column 3 below. Now here we have the column which totally describe about the addition, subtraction, division and multiplication. First we have addition. The symbol of addition is positive. The result of addition will be sum of 2, 3, 4 multiple numbers. Then here the example is given 16 is the sum of 12 and 4. 12 plus 4 that will be 16. So 16 एक ऐसा sum है किसका 12 and 4 का. Fine. Moving towards multiple subtraction. So the symbol of subtraction is minus, and it is basically the difference. दो चीजों के difference. So 8 is basically the difference between 12 and 4. 8 is the difference between 12 and 4. 12 minus 4 will be 8. So 8 क्या है difference है 12 and 4 के अंदर. Okay. After that, third we have multiplication. So the symbol of multiplication is multiply sign. It is basically related to product. दो चीज को multiply करना, product निकालना. So as you can see, 48 is the product of 12 and 4. 12 into 4 will be 48. तो क्या है 48 एक product है 12 and 4 का, दो integers का. Third we have division. In this, the symbol of division is basically and divide, and this is basically the quotient. कितना बचा है? तो 3 is basically the quotient of 12 and 4, because when we're gonna divide this 12 by 4, 4 1s are 4, 4 3s are 12. So 3 is basically the quotient of 12 and 4. So this is the 3. I hope this basic table of addition, subtraction, multiplication and division is clear to you guys. Okay. Fine. Now we are moving with the value, that is giving any two numbers a and b can always be sum, difference, product and quotient. If necessary except you can never divide by 0. अभी हमें दो वैल्यूज दी गई हैं, उसका आइदर हम सम ले सकते हैं, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन रिमेंबर के वो वैल्यू यू कैन नेवर डिवाइड बाय 0. किसी भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि when you're gonna divide the 7 with 0, the answer will be 0, and when you're gonna divide 7 with 0, it will be meaningless because it would always give you 0. So never divide any term with 0. The answer will always be 0. Okay, now here one example is given, so let's discuss this example. What is the sum of the product and quotient of 7 and 7? So first they have been asked कि sum क्या है, किसका sum, product का पहले and then quotient का. तो first we have to find out the product. तो 7 into 7 will be 49,
and then we have to find the quotient, so that will be 7 divided by 7 is equal to 1. So now they are asking about the sum, so then 40 plus 1 will be 40, sorry 49, not 40, 7, 49 plus 1 will be 50. So your answer is 50. Okay, so they have been asked कि सम करो किसका, पहले उन दोनों का प्रोडक्ट निकालो, फिर उन दोनों का क्वेश्चन निकालो, फिर द आंसर इज कमिंग, देन डू द सम ऑफ दोज एंड you will get your answer. Fine. Now here we have key fact number 3. In this they have been said that if any number a into 0 is equal to 0, कोई भी नंबर हो a, अगर कोई इंटीजर है, कोई भी नंबर, इसको हम 0 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर विल बी 0. Conversely, if the product of two or more number is 0, at least one of them must be 0. अगर कोई भी दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हम लेते हैं एंड द प्रोडक्ट इज 0, तो एक तो उनमें से 0 होगा ही होगा. फॉर सपोज a एंड b, दे हैव गिवन इफ a एंड b इज इक्वल टू 0, पूरी टर्म उन्होंने 0 से डिफाइन की है. सो दिस मीन्स a इज ऑल्सो 0 एंड b इज ऑल्सो 0. Okay, likewise if here I am going to give one value a b c is equal to 0, this whole term is equal to 0. So if you're gonna separate this, so a is also equal to 0, b is also equal to 0, and c is also equal to 0, as you can see in the both terms. Now moving towards example number 5. Fine. Example number 5. What is the product of all integers minus 3 to 6? माइनस 3 से लेकर 6 तक प्रोडक्ट क्या होगा? फाइन. सो दे हैव बीन आस्क्ड के प्रोडक्ट क्या है व्हेन द वैल्यू इज फ्रॉम माइनस 6 टू माइनस minus 3 to 6. So we have to find out the product. So let's do this. Okay, so here you can see minus 3, then we have minus 2, then minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 4, 5, and 6. Now just count these numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अभी 10 का प्रोडक्ट लोगे किससे? 0 से, तो that will be 10. The product किस इन सबका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 10. Okay, so now here moving towards another page with key fact number A4. So here we have key fact number A4, in which they are asking the product and quotient of two positive number or two negative number are always positive. जब भी आप दो पॉजिटिव नंबर का क्या लोगे, प्रोडक्ट लोगे या क्वोशंट लोगे, या दो नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट लोगे या क्वोशंट लोगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल दो पॉजिटिव नंबर का मैं ले लेती हूँ प्रोडक्ट, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18. दो पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? पॉजिटिव. और दो पॉजिटिव नंबर का क्वेश्चन ले लेती हूँ, डिवाइड बाय 3, सो इट विल बी पॉजिटिव. दो पॉजिटिव नंबर का मैं क्वेश्चन ले रही हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है, दो पॉजिटिव नंबर का मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है. अब इफ वी टू टॉक अबाउट टू नेगेटिव नंबर्स, तो माइनस 6 इंटू माइनस 3 इट विल बी 18. तो दो नेगेटिव नंबर का मैं प्रोडक्ट ले रही हूँ तो वो आंसर आ रहा है पॉजिटिव. और अगर मैं दो नेगेटिव नंबर का क्वेश्चन ले लेती हूँ, माइनस 3 6 डिवाइड बाय माइनस 3, तो द आंसर इज कमिंग पॉजिटिव. ठीक है, तो इन दिस पॉइंट दे बी आस्क्ड कि अगर दो पॉजिटिव नंबर का या दो नेगेटिव नंबर का आप प्रोडक्ट ले रहे हो या क्वेश्चन ले रहे हो, आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. एंड द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ द पॉजिटिव नंबर एंड द पॉजिटिव नंबर इज नेगेटिव. अभी क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. ठीक है, लेट्स हैव एग्जांपल. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है और माइनस 3 क्या है? नेगेटिव है. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. तो दूसरे पॉइंट में ये बता रहे हैं, अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं एक क्वेश्चन, अगर प्रोडक्ट यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर का एक नेगेटिव नंबर का, तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा. और अगर क्वेश्चन कर लेते हैं 6 डिवाइड बाय माइनस 3, सो इट विल बी -2.
So I hope these both examples are clear to you guys. Moving towards key fact number A5. ठीक है. Key fact A number 5 is being asked. The product of even number of negative factors is positive. अगर हमारे पास इवन नंबर्स हैं उनका अगर हम नेगेटिव फैक्टर ले रहे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा. और अगर हमारे पास क्या है ऑड नंबर्स हैं उसका नेगेटिव फैक्टर ले रहे हो तो क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा. ठीक है. ऑड नंबर का नेगेटिव फैक्टर नेगेटिव आएगा, इवन नंबर का नेगेटिव फैक्टर पॉजिटिव आएगा. फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 6 हैज बीन डिफाइंड. इफ द प्रोडक्ट ऑफ 10 नंबर्स इज पॉजिटिव. अगर 10 नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कुड बी नेगेटिव. इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर क्या है जो कि नेगेटिव हो सकता है. सो हियर वी हैव, अगर प्रोडक्ट 10 नेगेटिव नंबर्स का क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो द ऑल ऑफ द नंबर कुड बी नेगेटिव. तो सारे नंबर्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. क्योंकि जब हम 10 नंबर ले रहे हैं, 10 नंबर्स ले रहे हैं, उनका क्या आ रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव में आ रहा है. सो दिस मीन्स ये सारे 10 नंबर क्या हैं, ये सारे 10 नंबर क्या हैं, नेगेटिव हैं. तो द ग्रेटेस्ट वैल्यू नेगेटिव नंबर भी 10. ओके. Now here we have key fact number A6. In this they have been defined the reciprocal of any non-zero number is A is 1 by A. अगर कोई ये नॉन जीरो नंबर है A है और इसका हमें क्या चाहिए, रेसिप्रोकल चाहिए, सो इट विल बी 1 by A. ठीक है. और अगर द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज, अगर किसी नंबर का प्रोडक्ट चाहिए और उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, फॉर एग्जांपल A और इसका रेसिप्रोकल क्या है ए, तो हमें इसके प्रोडक्ट क्या आएगा, ऑलवेज विल बी 1. क्योंकि ये कट जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट विल बी 1. किसी भी पॉजिटिव नंबर का अगर आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है, फिर प्रोडक्ट नंबर चाहिए, सो वो क्या आएगा, ऑलवेज बी 1. ओके. मूविंग टूवर्ड्स की फैक्ट नंबर 7. फाइन. की फैक्ट नंबर A7. द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव. दो नंबर्स का सम करोगे, दो नंबर पॉजिटिव नंबर का सम करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव. दो नंबर नेगेटिव का सम करोगे तो नेगेटिव आएगा. टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड यूज द साइन ऑफ द नंबर विच इज क्रिएटेड. अच्छा, बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और एक क्या है, नेगेटिव नंबर है, और उनका आप क्या ले रहे हो, प्रोडक्ट ले रहे हो. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास 12 आएगा. लेकिन आपको साइन किसकी चाहिए, आपको साइन बड़े की लगानी होगी. द लार्जर विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू. साइन हमेशा किसकी लगेगी, लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू की लगेगी. ओके. लाइकवाइज हेयर अगर हम बस मैंने एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है 6 + 2 इज इक्वल टू 8. ओके. दो पॉजिटिव नंबर है. और अगर नेगेटिव की बात करें, -6 प्लस -2 इट विल बी -8. ठीक है. अभी साइन मैंने -8 क्यों लगाई, क्योंकि बड़ा -6 है, बड़ा वैल्यू क्या है, 6 है, और की साइन क्या है, नेगेटिव है. ठीक है. आई होप दिस पेज इज क्लियर टू यू गाइस. एंड नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर पेज.